हाय गाइस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन अल्काइलेशन के बारे में स्टडी किया था, जो कि नेम रिएक्शन है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अनदर नेम रिएक्शन is Riemann-Tiemann reaction. The starting material is phenol react with chloroform in presence of sodium hydroxide. Its form a intermediate and acidic hydrolysis. We get here salicylaldehyde. Got it? स्टूडेंट, जब हम क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं फिनॉल के साथ रीमर-टीमन रिएक्शन के अंदर, तो हमें सैलिसिलएल्डिहाइड मिलता है। अगर वो वहाँ पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट, दिस इज़ अ वेरी important reaction. This is a two-step reaction. This reaction may be asked in board exam for 2 marks. Got it? Now let's see the another name reaction. So next name reaction is Kolbe reaction. This is also very important reaction. The treatment of student, इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल जो है सोडियम फिनॉक्साइड से ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। बट हाउ यू प्रिपेयर द सोडियम फिनॉक्साइड, यू मस्ट नो अबाउट इट. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द reaction start from phenol. Phenol react with NaOH. We get here sodium phenoxide. Then sodium phenoxide react with carbon dioxide in at 398 Kelvin temperature and 6 atmospheric pressure is form a sodium salicylate followed by acidic hydrolysis. We get here salicylic acid. Got it? तो स्टूडेंट कीप इन माइंड, कोल्बे रिएक्शन के अंदर हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं और अर्लियर रिएक्शन जो हमने स्टडी किया था उसके अंदर हम सैलिसिलएल्डिहाइड बनाया है, जो रीमर-टीमर रिएक्शन है. गॉट इट? I think everyone understand. Now let's see the another name reaction is Williamson synthesis. This reaction is very important, student. This reaction is concerned with ethers. Got it? From this reaction we can prepare simple ether and mixed ether also. Do you know what is meant by simple ether and mixed ether? Divalent oxygen attached by similar alkyl group is called as simple ether. Divalent oxygen atom attached by different alkyl group is called mixed ether. In this reaction we can prepare the both type of ethers. Got it? So starting material required here is in this method, alkyl halide is treated with sodium alkoxide and to give a dialkyl ether. Got it? So I have written here general reaction and one example also. Got it? Then another is alkyl halide react with sodium phenoxide. We get here alkyl aryl ether. And example also I have written here. And methyl bromide react with sodium phenoxide. We get here anisole and sodium bromide salt is formed. So I think student, these 3 reaction everyone understand. Today I will stop here, student. Remaining name reaction let's see in next video. Bye bye guys.